Write less. Code more. अरे यार स्ट्रीम एंडिंग तो ही ना दिखाना था। अरे अरे सॉरी। वैसे हाँ, वैसे हम आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आम आम यस यस, एक बार सोच लेते, ठीक है। एक बार सोच लेते हैं। हाँ, आज हम लोग अनरियल इंजन खोल के देखेंगे। अरे बेटे, मेरे को कतई कतई डर लग रहा है, समझ में आ रहे हो। आई होप एपिक लॉन्चर काम कर जाए, प्लीज 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 काम कर जाओ। आप प्लीज काम कर जाओ, मैं आपको बहुत पैसा दूंगा, मैं आपको बहुत पैसा देगा। रुको यार। अरे स्टीम के साथ ही तो किया था। अरे रुको यार, एक सेकंड गाइस। हाँ, अभी 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 चलो चलो बेटे। प्रिपेयरिंग द एपिक गेम्स लॉन्चर। अरे बेटे बेटे, यो बेटे। ओ भैया, एक्सक्लूसिव बंडल। स्टोरी ऑफ ए स्टोरी फ्री नाउ पाइन, ए स्टोरी ऑफ ह्यूमंस। नहीं, आई ऑलरेडी एक्सेप्ट। अरे भैया, एक्सेप्ट करके करके रखा है भाई। अरे क्या नया नया कुछ आया है क्या अनरियल इंजन का भाई। लाइब्रेरी। अरे सेल्सियम तो ऐड किया था तुम्हारा। ओ सब गेम्स। अरे भैया, ओ भाई, पूरी बेटे फ्री कुछ मिल रहा है। फ्री, ओ वर्ल्ड ऑफ वारशिप फ्री देखते चलो। फ्री फ्री पाइन भी फ्री मिल रहा है, स्कैवेंजर्स फ्री मिल रहा है, ब्रेव फ्री मिल रहा है। अरे बेटे, कोर तो ऐसे भी फ्री होगा भाई। रॉकेट लीग फ्री मिल रहा है। लेट्स गो। रॉकेट लीग फ्री मिल रहा है। अरे लाइब्रेरी में नहीं, लाइब्रेरी मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस चलो, मार्केट प्लेस चलते हैं चलो आज। ओ वो, व्हाट इज दिस। कॉस्मोस ट्रूपर। हेलो कॉस्मोस ट्रूपर। हेलो कॉस्मोस, नहीं क्या, हाँ कॉस्मोस ट्रूपर हेलो। मॉन्स्टर म्यूटेंट फॉर हेलो। अरे चैट बॉक्स इधर में है ना, हाँ बढ़िया। चैट बॉक्स, चैटिंग बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। एडवांस सस्पेंशन ब्रिज।
एडवांस सस्पेंशन ब्रिज, पियानो सोलो पैक। अरे बेटे पियानो भी मिलेगा तुमको। वर्चुअल क्या क्या क्या? रुको। अरे अनरियल इंजन। अरे भाई मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस। रुको लर्न पे जाते हैं भाई, लर्न पे जाते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग क्विक स्टार्ट। चलो दिखाओ, दिखाओ हमको, दिखाओ हमको, दिखाओ जल्दी, दिखाओ जल्दी, दिखाओ हमको जल्दी, दिखाओ। पिक्सल पिक्सल स्ट्रीमिंग। हेलो हेलो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ओ बाप रे बाप, ये क्या है? With a pixel streaming plugin introduced in Unreal Engine 4, you can run your Unreal Engine application on remote computer stream. It is rendered output to modern web browser running on any platform. अरे भाई सच्चे सच्चे? ओ भैया, ये तो कतई वेब जेल बना दिया इन लोगों को, ये तो कतई वेब जेल बना दिया। अंडरस्टैंडिंग। हाँ भाई, गेम प्ले मैकेनिक्स ऐसे बनाते हैं, गेम प्ले मैकेनिक्स कैसे बनाते हैं? रुको यार। हाँ चलो, कोई कोई कमेंटिंग नहीं कर रहे, कमेंटिंग नहीं। गेम प्ले फ्रेमवर्क, गेम प्ले गाइड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हावोक हावोक ऑन supported optimized across major platforms including Nintendo. Okay. ओ बैठे बैठे, ये प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, गेम प्ले, ब्लूप्रिंट एंड विजुअल्स, प्रोग्रामिंग विद C++। क्या क्या? मेरा कौन सा है? अरे अरे, ये तो मुझे बोला ही नहीं। वो क्या क्या? अरे बोला ही नहीं मेरे को। अरे नॉट इंस्टॉल्ड। अरे भाई इंस्टॉल, इंस्टॉल तो किया था। अरे क्या फालतू में? अरे आई हैव एक्सेप्ट इंस्टॉल। अब ये 1 घंटा 2 घंटा और लगाएगा भाई मेरे, मैं मुझे ऐसे ही मजा नहीं आता भाई। अनरियल इंजन का रुको रुको यार, अनरियल इंजन डिटेल। 4। अरे यार, तक रिज्यूम। अभी क्या हो गया? अभी इसको क्या हो गया अभी? रुको रुको रुको, एक्स
नो 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 नो, अरे भैया इसको शट डाउन थोड़ी ना करना था। अरे यार रुको। ओके रुको। हेलो, इसको इसको क्या हो गया? अरे अनरियल इंजन कौन सा वर्जन? ये कल खुल जाएगा साला। अनरियल अनरियल। ओके। हाँ क्या था और फिर? कस्टमाइज। बिल्ड, अरे भैया टूल बार। और फिर स्टैंडर्ड। मॉडिफाई सेक्शन। रुको यार, अभी अभी मुझे ये भी, ये खुल रहा है, अभी खुल रहा है ये। अरे देर क्यों करते हो? अरे भाई देर क्यों करते हो? देर क्यों करते हो बेटे? हम्म, देर क्यों करते हो? क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब। चलो करते हैं। लेट्स गो। दिखाओ, दिखाओ बेटे दिखाओ। ओ भाई, ये क्या हो गया? टूल बार किधर में है? वेयर इज द टूल बार? अरे टूल बार किधर में है? अरे बेटे, अरे क्या हेल्प में? if the version।
क्या? अरे हो क्यों नहीं रहा है? रुको रुको यार, कुछ 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 ट्यूटोरियल देख लेता हूँ मैं, कुछ कुछ ट्यूटोरियल। तो वीएस टू अनरियल इंजन विजुअल स्टूडियो, चलो चलो दिखाओ। Do you write code? अरे नहीं Step चाहिए, 9 will speed up your अरे coding process. अरे नहीं चाहिए। Hello? कौन देख रहे रे? रुको यार। रुको यार एक सेकेंड। पॉप आउट चैट, चलो। Hello everyone, this video will be about getting Visual Studio under where it says Community and Visual Studio 2019 or whatever the newest version of Visual Studio is. And double click it to run it, and then you'll be asked prompt finish install plus. Check off this checkbox and then click the install button on the bottom right. And what this will do is not only will it start the installation for I have a shortcut here, but I also have it open up already. And then once you have Unreal Engine open up, go to the new project tab, and then instead of blueprint, select the C++ tab, and I'm going to choose the first person template and just name your project whatever. For example, I'm going to name it test. It doesn't really matter. Versions of Visual Studio, and this is where you would specify the version of Visual Studio that you want Unreal Engine to default to. Since in this video we only installed one version of Visual Studio, we're not going to mess with this setting, but if you did have multiple versions of Visual Studio installed, you would choose the version of Visual Studio that you would prefer to use with Unreal Engine, down to where it says source code, and fill out those fields and then sign in, and then once you sign in, you can now use Visual Studio. To test that we have everything installed correctly, open up Unreal Engine. I have a shortcut here, but I also have it open up already. And then once you have Unreal Engine open up, go to the new project tab, and then instead of blueprint, select the C++ tab, and I'm going to choose the first person template. नेक्स्ट, थैंक यू। C++, अभी सालो C++ में हो रहा है, नहीं तो पहले पूछते थे यू कैन ओनली क्रिएट प्रोजेक्ट बाय डूइंग तुम्हारे। अरे यार मैं कुछ देख रहा हूँ। And just name your project whatever. For example, I'm going to name it test. It doesn't really matter. And then click the create project button. Once your project has been created, I just want to show you guys a setting for those people with multiple versions of Visual Studio installed. So go to edit on the top left here, and then go to editor preferences, and then under where it says general, go down to where it says source code, and you'll see an option labeled source code editor that's linked to a drop down menu with अरे तो मैं थोड़ी ना बोला कुछ, इसको अभी घंटे लग जाएंगे शायद। open up already, and then I'm going to name it test engine to default to. Since in this video we only installed one version of Visual Studio, we're not going to mess with this setting, but if you did have multiple versions of Visual Studio installed, you would choose the version of Visual Studio that you would prefer to use with Unreal Engine, and then select it. And then once you do select it, you're going to have to restart Unreal Engine for the change to take effect. Now I'm just going to close out of here, and let's go to file here, because I want to show you guys the two commands that source code
ओ भैया editor option is linked to. You're going to see here under where it says package project, you're going to see refresh Visual Studio project and open Visual Studio. These two commands, to see if the refresh and under the folder labeled games, you'll see your specifically work in the character class, which should be labeled by name of project character.cpp. And what I'm going to do, I'm going to add an include statement right here at the end of this long list. Hashtag include in double quotes game framework slash character movement component.h. And now we're going to go into the constructor here that starts at line 21. I'm going to add code at the end of this constructor. I'm going to make a variable of type u character movement component star. I'm going to name it movement comp, and I'm going to set it equal to get character movement. And I'm going to set the speed of this movement comp, the max walk speed. So to do that, just type what I'm typing here, movement comp arrow max walk speed. I'm going to set it to 2000, just a large value, because the default value in Unreal for the max walk speed is 600. So I'm just doing this to make sure that we can see a difference in our code. And to do that, just make sure in this drop down menu under where it says debug, make sure that you have development editor selected for the solution configuration, and then for the drop down menu right next to it, select Win64 if you're using a 64-bit Windows machine for your solution platform configuration, and then for the drop down menu right next to it, select Win64 if you're using a 64-bit Windows machine for your solution platform. Now if you're using 32-bit Windows, then use Win32. Once you have those settings set, go again to the right hand side under the games folder, right click your project here and select build, and let your project build. You should see an output window pop out here on the bottom of your Visual Studio, and you know your build has succeeded if it says at the end of this output window. ए रुको यार ओ भाई फिर से क्यों खोला अरे भाई फिर से क्यों खोल रहे Build succeeded. ओ भैया अभी थोड़ा सा खतरनाक होगा अभी ओ भैया हो गया लेकिन भाई इंजन क्यों बंद हो गया रे इंजन अच्छा इंटलाइजिंग इंटिलाइजिंग ल, 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 Once the build has work in the character Studio where your project is loaded, and you'll see a prompt labeled follows our instance of ओ भाई प्रे रुको यार धीरे धीरे करके ओ
ड्राइव स्पेस, इसको डिलीट करना पड़ेगा।